I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, I will start. Please let me know in the comment box if I am audible to you. If I am audible to you, please let me know in the comment box. So if I am audible, please let me know. I will start. I hope I am audible to you. I am audible. So in the last lecture, what we have seen, in the last lecture we was discussing about the enzymes from the biochemistry. Just a minute. Hello. मैं करता हूँ फोन में, लेक्चर ले रहा हूँ, करता हूँ. So I hope I am audible to you. Everybody, please let me know in the comment box. So what we have seen yesterday, I would like to revise you. We was started with the biochemistry of enzymes. We have seen the introduction part. What do you mean by enzymes? They are the biocatalyst. They will increase the rate of reaction without undergoing the change in the overall process. We have seen that. So they basically decreases the energy of activation. So whenever there is a reaction, जब भी reaction होता है, so reactant they should collide to each other. They should react to each other. There should be collision between these two reactant, and for that the energy which is utilized is known as the energy of activation. So energy of activation is lowered by enzymes. We have seen alloenzymes. Holoenzyme is active part, apoenzyme is a protein part, coenzyme is a non-protein part. So most of the enzymes, they will not only catalyze the reactions only if protein part is there, but some enzymes, rather a lot of enzymes requires a non-protein part, okay, known as a coenzyme. That may be either coenzyme is nothing but the inorganic non-covalently bonded part which is required for the catalysis. Okay, so we have seen that types of enzymes we have seen. After that we have seen the classification of enzymes. So International Union of Biochemistry, as per the International Union of Biochemistry, we have seen there are 6 classes, oxidoreductase, transferases, hydrolysases, liases, isomerases, ligases. We have seen what they do. We have already seen. So we have seen the factors affecting on the enzyme action. So concentration of the enzyme, so there is increase in the rate of velocity. So increase in the concentration, the rate of reaction will increase. Substrate concentration, again, if the concentration, the rate of velocity of enzyme catalyzed reaction is dependent on the substrate known as a first order. If it is not, then it is known as zero order, right? So we have seen what is meant by Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation, we have seen that part. We have also seen the effect of temperature, what is meant by Line-Beaver double reciprocal plot. So on that they was already asked question. Michaelis-Menten equation Km वैल्यू क्या है, Michaelis-Menten equation इंपॉर्टेंट है, Lineweir-Burke डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद Km वैल्यू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ pH we have seen. So you can see over here in this slide. Effect of pH, effect of temperature we have seen. After that we have seen the enzyme inhibition are of 3 type, reversible, then irreversible, then suicidal inhibition and allosteric inhibition. तो बेसिकली 4 टाइप का एंजाइम इनहिबिशन होता है. पहला आपने देखा है रिवर्सिबल, इसमें नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड फॉर्म है ना. सो इनहिबिटर विल बाइंड non-covalently to the enzyme
उसमें दो टाइप होता है, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव. So what happens in that we have already seen. After that we have seen the irreversible inhibition, reversible, irreversible, then after that suicide inhibition, after that that is a allosteric inhibition, right? So we have seen this part, right? So this was our last slide. So again I would like to request everybody please join. So I will let once message in the group कि join नहीं किया है किसी ने, सबको मतलब गरज मेरे को है, ऐसा है. The need is of mine. The need is of mine and nobody is caring about the lectures. But it is my responsibility to take the lecture. It is my responsibility to message in the group every day at 7 p.m. It's my responsibility to teach. It's my responsibility to apply for GPAT. It's my responsibility to qualify the GPAT. Because you don't care. All responsibilities of mine, not of yours. That is the condition nowadays. Every GPAT aspirants. So we have already seen types of inhibition. इसमें है ना, इसमें 4 टाइप का inhibition होता है. enzyme inhibition. There are 4 type of enzyme inhibition. First one is a reversible. In that you have 2 type, competitive enzyme inhibition, non-competitive enzyme inhibition. After that there is irreversible, in which inhibitor binds covalently. After that there is a suicide inhibition, we have already seen. So in this what happens, the inhibitor is converted into more potent inhibitor by the same enzyme which is to be inhibited. So the suicide inhibition, we have already seen the examples also, allopurinol, etc, etc. Allosteric inhibition means what? So in the enzyme you have different sites. So on the enzyme you have different sites. So this is known as a crevices or pockets on the enzyme structure. Enzyme क्या है? Basically enzyme is a big structure. It is a big molecule composed of a protein, right? So there is a 3-dimensional structure of this enzyme. So the crevices or pockets, they are known as active site. So as enzyme is a large in the size, you know, so catalysis that occurs at a particular amino acid sequence, catalysis that occurs at a particular part of your enzyme. Catalysis occurs at a particular part known as the active site. It is known as active site. So the catalysis occurs at a smaller part where there is active groups or active amino acids known as the active site, right? There is another site known as the allosteric site, to which allosteric activators and regulators binds to the enzyme and regulate the enzyme activity. तो जो मेन साइट होता है जहाँ से कैटालाइसिस होता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, that is known as the active site. The substrate will bind to enzyme at a particular amino acid sequence known as the active site. Catalysis occurs at an active site. Okay, so we are going to see the features of active site. Don't worry, but there is another site known as the allosteric site. So allosteric effectors or regulators or inhibitors, they bind with the allosteric sites and they will regulate the enzyme activity. So allosteric inhibitors are the enzyme regulators. So allosteric effector or modulator, they will modify the actions of enzyme at allosteric site and regulate the enzyme activity. So a reversible type of inhibition एक होता है, उसमें competitive, non-competitive होता है. Irreversible type of inhibition होता है, इसमें covalent bonding होता है. Reversible में covalent bonding नहीं होता है. So inhibitor will not form covalent bond in a reversible type, but in an irreversible type it will form a covalent bond. Then suicide inhibition is there, so where inhibitor is converted into more potent inhibitor form by the same enzyme. Then allosteric inhibitors, right?
Now next, okay, next we'll see enzyme specificity. So enzyme specificity. Enzymes are highly specific in their action. तो एंजाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है. Enzymes are highly specific. Okay, as in chemistry you use catalyst. आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट यूज करते हो. So catalyst or chemical catalyst, they are not a specific in their action. So enzymes are very specific. Okay, their specificity can be classified into 3 types. उनका जो स्पेसिफिसिटी होता है वो 3 टाइप का होता है, राइट. सो फर्स्ट वन इज नोन एज अ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सेकंड वन इज नोन एज अ रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, एंड थर्ड वन इज नोन एज अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. So these 3 enzyme specificity we are going to see in our upcoming slide differently. ये तीनों अपन देखेंगे बाद में. तो enzymes specificity is mostly dependent on the, remember, apo enzyme, not on a coenzyme. This line is important. इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. तो एंजाइम आर स्पेसिफिक इन एन एक्टिविटी. एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सब्सट्रेट को ही बाइंड करेगा, नोन एज अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. पर्टिकुलर एंजाइम है ना, पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिकल फॉर्म ही देगा, नोन एज अ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन ही करेगा. ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एंजाइम it only catalyze the oxidation and reduction reaction, है ना. Ligase enzyme will cause ligation reaction, so that is known as enzyme specificity. So they are very specific in their action, and the specificity is relying on the apoenzyme part of enzyme. जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, होलो एंजाइम इज इक्वल टू apoenzyme plus coenzyme. होलो एंजाइम इज अ एक्टिव पार्ट, so apoenzyme is a proteinous part and coenzyme is a non-protein part, right? So the enzyme specificity determines or lies on the apoenzyme part of holoenzyme. Remember now how enzymes will catalyze the reaction, formation of product. So theories related to enzyme action. Theories related to enzyme action. So there are 3 theories proposed to explain the enzyme action. पहला theory है that is proposed by Emil Fischer. Emil Fischer एक Fischer है, Emil Fischer. So he proposed the mechanism of action of enzyme, the theory for mechanism, theory for explaining the mechanism. तो Emil Fischer ने mechanism enzyme कैसे act होता है उसके लिए एक theory दिया है, उसका नाम है lock and key model. So Emil Fischer proposed a theory known as a lock and key model. After that, okay, but as per the Emil theory or Fischer theory, so we'll see in upcoming slide. Okay, second theory is nothing but the Coastlands theory, Coastlands model or induced feed theory, and third theory is nothing but the substrate strain theory. There are 3 theories proposed for the एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम कैसे एक्ट होते हैं, ये मैकेनिज्म के लिए 3 थ्योरी है. पहला थ्योरी है लॉक एंड की मॉडल, दैट वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर. सेकंड थ्योरी होता है इंड्यूस्ड फीड थ्योरी, दैट वाज प्रपोज्ड बाय कोस्टलैंड, आल्सो नोन एज कोस्टलैंड मॉडल. एंड थर्ड थ्योरी होता है ये सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी. ये तीसरा थ्योरी है. सो विल सी दिस थ्योरी इन नेक्स्ट स्लाइड, डोंट वरी. सो एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का एक्टिविटी जो है, so whatever enzyme catalyzes the reaction, so that activity is measured in case of one unit. Enzyme activity is measured in catal unit, catal, CATAL, catal unit. 1 catal is equal to, so it notes the conversion of 1 mole of substrate to the product per second. Conversion of substrate to the product per second. 1 mole of substrate is converted into product per second. Conversion of 1 mole of substrate per second into the product, है ना. It is known as a international unit. क्या है इसका, कैटल. 1 कैटल is equal to 6 into 10⁶. ये क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है. 1 कैटल is equal to
6 into 10 raised to 6, right? So enzyme activity is measured in the case of measured in the Catal unit. So it is nothing but the one cat is nothing but the 1 Catal is equal to conversion rate of 1 mole of substrate per second, mole per second, conversion rate of mole per second. That is a Catal. Enzyme have a different application. इनका एप्लीकेशन बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, थेरापेटिक एप्लीकेशन है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है, ये सब आज अपन देखने वाले. यू कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ पे एक चार्ट है, एंजाइम्स, एलोस्टेरिक इनहिबिटर एंड एक्टिवेटर. वी हैव सीन दैट so enzyme has a active site and it has another site known as allosteric site, that is a regulation site. तो enzyme को regulate करने वाला site होता है वो, तो enzyme regulate करने वाला allosteric. तो जैसे for example alanine transaminase synthesis enzyme. तो allosteric inhibitor क्या है इसका? हीम. allosteric activator नहीं. aspartate ट्रांसकार्बोक्सिमॉल इसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर है CTP, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट. देन HMG कोई रिडक्टेज एक एंजाइम है, उसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है कोलेस्ट्रॉल. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, उसका एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है ATP एंड साइट्रेट. एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है फ्लोरीन एंड 6-phosphate. Now we have seen what do we mean by coenzymes. Coenzymes क्या होते हैं? These are the non-protein part of enzyme. They are the non-protein small molecular weight, inorganic or maybe organic, non-protein organic or inorganic small molecular weight which is essential for the enzyme activity. Yeah, known as a coenzyme. All enzymes will not, it is not sufficient to have only apoenzyme, मतलब protein part. Hollow enzyme is a active enzyme, has a two part. One is a protein part known as apoenzyme, and second part is a coenzyme. Or but coenzyme क्या है? It is a non-organic, inorganic part, which is essential, low molecular weight, which is essential to show the effect, to show the enzyme action. Most of them are nothing but the coenzyme derived from the vitamin B complex. देखो thymine pyrophosphate TPP. So what is this is a coenzyme, name of coenzyme TPP, thymine pyrophosphate, thymine based coenzyme. तो इसमें ये इन्वॉल्व होता है. It is involved in the hydroxyethyl group transfer. Then pyridoxal phosphate B2 का PLP. So it is involved in the amino group transfer. जैसे biotin का base coenzyme is a biotin based coenzyme is involved in the carbon dioxide transfer. Coenzyme A is involved in the acyl group transfer. Tetrahydrofolate is involved in the 1 carbon group transfer. Adenosine triphosphate ATP is involved in the transfer of phosphate. Then metalloenzymes मतलब क्या? Some enzymes hold the metal tightly. So example is the first metal is zinc. So zinc is a metal, gem is a metal present in the carbonic anhydrase enzyme, carboxypeptidase enzyme, alkaline phosphatase enzyme. Magnesium is a metal present in the hexokinase, important for the hexokinase activity, phosphofructokinase activity, enolase activity. Manganese is responsible for the hexokinase and enolase activity. Copper is important for tyrosinase and cytochrome oxidase. Iron is important for cytochrome oxidase, xanthine oxidase. Calcium is important for lecithinase and lipase enzyme. Molybdenum इसके लिए xanthine oxidase के लिए. तो enzymes बाद में coenzymes and metalloenzymes. Okay. Now next we'll see. Now theories for the enzyme action. Theories for the enzyme action. So there are three theories
So this is a enzyme. एक structure है. It is a hypothetical structure of enzyme. So these pockets or crevices or depression in the enzyme structure. Enzyme क्या है? Protein. It is a protein in nature. So it is a protein and there is a conformation. There is a particular conformation, right? So as per the first theory, so this is known as ये जो crevices है, these crevices or pockets, they are known as the active site. They are known as the active site. They are known as the active site. The actual catalysis occurs at the active site. ये आप याद रखना है. Right? Now first theory is nothing but the Fisher's theory. Fisher's or Emil Fisher's theory known as a lock and key model. So lock and key model. So as per this theory, तो पहले तो active site क्या होता है ये समझ लो, है ना. These depressions or these crevices on the enzyme structure known as active site, where actual catalysis occur. यहाँ पे substrate will bind to the active site and convert it into product. Okay. So first theory we'll see, that is nothing but the Fisher's theory or lock and key model. So first theory is nothing but the Fisher's theory or lock and key model. So as per this theory, ये theory क्या बोलता है आपको? According to this theory, the enzyme structure is rigid. क्या बोलता है? enzyme का structure fix होता है. So as per the lock and key model और Emil Fisher theory, the structure of enzyme is rigid. वो बोलता है कि enzyme का structure क्या है? Rigid है. Is not a flexible. Okay? And है ना, enzyme structure is rigid and it is a complementary to the substrate. मतलब substrate जो है उसका structure के accordingly enzyme का structure होगा, and so that a substrate will fit perfectly in the enzyme like this. Enzyme substrate complex जब बनेगा, when there is an enzyme substrate complex, so substrate will fit in an enzyme perfectly as that of the lock and key. So only particular key can open a particular lock. ना आपके घर की चाबी, आपके घर का लॉक आपके घर की चाबी से ही खुलेगा. मैं अगर जेब में नया चाबी लेके जाऊँ तो वो नहीं खुलेगा. क्यों? Because there is a perfect fitting, right? So as like that, the lock and key model state that so enzymes has a particular configuration which is suitable to fit a particular substrate. Then only enzyme substrate complex will form, because which is the first requisite for the enzyme catalyzed reaction. सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का कोलिजन होना चाहिए, उनका है ना, उनका अटैचमेंट होना चाहिए, तभी जाके substrate will be converted into product. But for that prerequisite is the collision, and for collision energy is required. So that is the activation energy. So that is lowered by enzyme. So enzyme, as per the lock and key model, enzyme is having rigid structure, and enzyme and substrate they are having complementary structure. Exactly, substrate will fit in the enzyme as that of the particular key will open particular lock. That is a lock and key model. Okay, so that is not, lock and key model is not adequately useful to understand the mechanism of action of enzyme, है ना, and it is not also proving the inhibition and induction of enzyme. Okay. Now second theory was there. So second theory is known as a Coastlands theory. Coastlands theory or induced fit model. Induced fit model मतलब क्या? According to this theory, the enzyme structure is not a rigid structure. Enzyme structure is not a rigid structure, है ना? So it is a flexible. So according to Coastlands theory, enzyme structure is a flexible. It is a flexible at active site, but when substrate will substrate will be in a contact with the enzyme, so substrate will induce the conformational changes at the active site. So according to the Coastland, जब ये substrate जो है, जब enzyme के ऊपर आएगा, when substrate will interact with the enzyme, so substrate will bring about the changes. Substrate will
इंड्यूस द कन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड कन्फॉर्मेशन, तो सबस्ट्रेट अपने हिसाब के शेप के थ्रू यहाँ पे इंड्यूस करेगा कन्फॉर्मेशन. So according to this theory, the enzyme is a flexible molecule and it is induced in a presence of substrate, so that perfect substrate will fit up in a perfect enzyme, है ना. That is known as a induced fit theory or Coastlands theory. थर्ड theory होता है substrate strain theory. तो substrate strain theory, तो है ना, again substrate will induce the enzyme to make a certain changes in the configuration, and when there is an enzyme substrate complex formation, so substrate will be strained. substrate के ऊपर क्या होगा, strain आ जाएगा. there is a strain on substrate. now is a substrate strain theory. so these are the three theory proposed to show the mechanism of action of enzyme. तो पहला होता है लॉक एंड की मॉडल और फिशर्स theory or Emil Fisher's lock and key model. Second is nothing but the Coastlands induced fit model, and third one is nothing but the substrate strain theory. These two theories explain the mechanism of enzyme action perfectly, and also explains the inhibitors, use of inhibitors, allosteric inhibitors and all that, right? So ये theory है, you have to remember. Now you can see over here same again. So enzyme has a two side. एक होता है आपका catalytic site, also known as the active site, catalytic site or active site. And second होता है allosteric site, to which allosteric modulators will bind. Now when substrate will combine with the active site, and when activator or allosteric activators, when activator is fixed at a catalytic site, now enzyme will assume a correct configuration for substrate, and substrate can bind now. तो allosteric activators कैसे act करते हैं, तो allosteric activator will bind at a allosteric site. now enzyme will get a configuration as per the substrate. Then allosteric inhibitor, when it will bind to a allosteric site, right, the catalytic site do not assume a correct shape or configuration to support a binding to a substrate. मतलब जब इनहिबिटर allosteric inhibitor जब बाइंड होता है एंजाइम में, तो ये जो कैटालाइटिक साइट के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होने वाला है वो नहीं होता. दैट्स व्हाई substrate cannot bind to an enzyme. That is known as the allosteric activators and allosteric inhibitors. Allosteric activator, allosteric inhibitor. Nobody has taught you this, I know. No. You can see over here lock and key model. तो यहाँ पे this is known as the enzyme and this is known as the active site. So at an active site, particular amino acid sequence is there. So substrate and enzyme, they are having a structure opposite to each other, like a lock and key. Then जैसे ये lock है और ये key है. A perfect key will fit in a perfect lock. Likewise that. So enzyme and substrate are specific to each other, and this is similar to a lock and key, known as a Emil Fisher's theory. Second होता है आपका Coastlands theory, known as induced fit theory. So suppose this is a shape of substrate or particular configuration of substrate. Substrate fixes at a shallow groove of enzyme, but present alignment is not correct. Substrate जो है वो enzyme के ऊपर फिट हो रहा है, but alignment is not correct, है ना. ये ऐसे कैसे फिट हो सकता है, नहीं हो सकता. So what happens? So fixing the substrate induces the structural changes in the enzyme. Now substrate can correctly fit into the enzyme. यहाँ पे देखो, तो now substrate will bring about the conformational changes in the enzyme, so that there is a correct fitting of substrate with the enzyme. Then substrate analog cannot bind properly,
so catalytic groups are not present. तो substrate analog यहाँ पे नहीं bind कर सकते as per the Coastlands theory. So this is a Coastlands induced effect theory. Now metal activated enzymes, जैसे most of the enzymes requires a metallic cation. बहुत सारे most of the enzymes require metallic cations, like for example magnesium, manganese, zinc, calcium, sodium, copper, potassium. So amylase enzyme requires a anion chloride. ATPase enzyme requires a magnesium calcium cofactor. Enolase enzyme requires magnesium. So they are known as a metal activated enzyme or cofactor, metallic cofactor. Some enzymes are the metal enzyme. Metal enzymes and metal, they are tightly bound. Metal is held by covalently bond into enzymes known as a metal enzyme. Say alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, acid and alkaline phosphatase, aldolase, carboxypeptidase. आपने देखा है ऊपर वाली स्लाइड. Copper is a particularly for phenol oxidase, manganese for pyruvate oxidase, molybdenum for xanthine oxidase, iron and copper for cytochrome oxidase. आपने ऑलरेडी देखा है. Now what is meant by active site? The features of active site, very important. तो active site मैंने बोला है क्या है? The site at which a particular amino acid sequence are present and particular amino acids are present. Here substrate will bind and there is a catalysis. तो एक substrate जो है, reactant जो है, substrate जो है, it will bind to a enzyme at the active site. What are the features of active site? ये important है. Now it is a tertiary, because of tertiary structure of enzyme. Enzyme क्या है? It is a protein. Because of the tertiary structure of protein, which is resulted from three-dimensional structure and conformation structure and conformation. So active site is made from amino acid. उसको बोलते हैं catalytic residue. The amino acid which are present at the active site known as a catalytic residue, which are placed at a distance. Example, in a lysosome has a 129 amino acid, but at the active site the residue is nothing but the amino acid 35, 52, 62, 36. मतलब lysozyme जो है, ये जो क्या है, enzyme है. Lysozyme is an enzyme, so it has a 129 amino acid, but at the active site 129 अमीनो एसिड है उसमें लाइसोजाइम में, बट एक्टिव साइट के ऊपर कितने हैं? एक्टिव साइट के ऊपर ओनली, एक्टिव साइट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली अमीनो एसिड नेम्ड 35, 52, 62 एंड 63 एंड 101. मतलब क्या कि लाइसोजाइम हैज अ 129 अमीनो एसिड सीक्वेंस, बट एक्टिव साइट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली amino acid known as a 35 number, amino acid 52 number, 62 number, 63 number and 101 number. तो ये amino acid ही active site बनाते हैं. तो active site is also called as a cleft or crevices or pockets occupying a smaller region of a larger enzyme. Active site is not a rigid in a structure, it is a flexible. Now active site has a two site. First site is a substrate binding site and second site is the catalytic site. तो एक जगह पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, और जहाँ से सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता है उसको बोलते हैं कैटालाइटिक साइट. तो ओके, तो कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर आर आल्सो इम्पोर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट. जो कोएंजाइम है, कोफैक्टर्स है, वो भी एक्टिव साइट का ही पार्ट होता है. सबस्ट्रेट विल बाइंड टू एक्टिव साइट बाय वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड. So substrates will bind to the enzyme by a non-covalent bond specific in their action. Substrate and enzymes are specific in their action due to existence of active site. Why enzymes are specific in their action? Because of the presence of active site. ठीक है. Now active site के ऊपर mostly serine. So most common amino acid present at active site is a serine. Serine is the most common amino acid present at active site. Serine, cysteine, lysine, arginine, glutamate, tyrosine, they are the amino acids commonly found at the active site. ठीक है, ये active site के ऊपर ये amino acids होती है.
So remember, active site is an important feature of your enzyme. So because of the tertiary structure of the protein, क्योंकि enzyme क्या है, protein in nature है. Tertiary structure results from the three-dimensional structure and particular conformation. So enzyme has a particular conformation. Active site is made from a amino acid. पर्टिकुलर अमीनो एसिड रहेगा वो एक्टिव साइट पे, ठीक है. उसको बोलते हैं अपन कैटालाइटिक रेसिड्यू, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम एक एंजाइम है, उसमें 129 अमीनो एसिड्स, बट एक्टिव साइट के ऊपर कौन से है, ओनली अमीनो एसिड नेम्ड नंबर 35, 52, 62, 63 एंड 101. तो ये बंच अमीनो एसिड का एक्टिव साइट पे होगा. एक्टिव साइट इज आल्सो नोन एज क्लिप्ड और क्रेवाइसेस और पॉकेट्स व्हिच ऑक्युपाई अ स्मॉल रीजन ऑफ लार्ज एंजाइम. तो एंजाइम क्या है, साइज में बड़ा है, बट एक्टिव साइट के ऊपर जो है अमीनो एसिड्स है. बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ क्लिप्ड और क्रेवाइसेस और पॉकेट्स, है ना. तो कैटालाइसिस ऑकर्स एट एक्टिव साइट ओनली. एक्टिव साइट में भी दो साइट होता है, वन इज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, नाम इज अ कैटालाइटिक साइट. Coenzymes, cofactors, they are also part of active site. And a substrate will bind to active site by weak non-covalent bond. Enzymes are specific in their action due to existence of active site only. है ना. Most commonly amino acid found at the active site is nothing but the serine, cysteine, lysine, arginine, glutamate, tyrosine. They are commonly found at the active site. ठीक है. Now enzyme specificity. So as compared to chemical catalyst, enzymes are highly specific in the action. Okay, so thousands of enzymes are present in the biological system to catalyze the reaction or to for the metabolism, है ना. कि ये जो biological catalyst है, मतलब enzyme, तो वो क्या है, highly specific होता है, and that's why number of enzymes are present in the body for particular reaction, है ना. So this is known as the enzyme specificity. Now enzyme specificity can be divided into three types. पहला है, और it can be explained in terms of three terms. पहला है आपका स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, also known as optical specificity. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, ठीक है. उसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एंजाइम, ओके, एंजाइम एक्ट ऑन ओनली वन आइसोमर. Say for example, L amino acid oxidase, it will act on only L amino acid. D amino acid oxidase will act on only D amino acid. So they are the, you know, hexokinase will act only on D glucose, D hexose. You know, amylase will act only on alpha glycoside linkage. Cellulase act on a beta glycoside bond. You know, that means enzymes, they only act on only one isomer, known as a stereo specificity or optical specificity. Remember, all enzymes are stereo specific except isomerase. तो आइसोमरेज कैटेगरी का एंजाइम होता है, दे आर नॉट अ स्टीरियो स्पेसिफिक. ऑल अदर एंजाइम्स आर अ स्टीरियो स्पेसिफिक. ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिसिटी. सेकंड टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी इज नथिंग बट द रिएक्शन स्पेसिफिसिटी. तो एक ही आपके पास में क्या है, सबस्ट्रेट. तो सेम सबस्ट्रेट कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. एक ही रिएक्टेंट है आपके पास में, there is one only on substrate. Substrate मतलब the product. Substrate मतलब क्या है, the compound which is to be transformed into product by the enzyme. Same substrate can undergo different reactions, and that is catalyzed by different separate enzymes, है ना. For example, है ना, तो same substrate can undergo different reaction catalyzed by different enzymes, known as a reaction specificity. So for example,
amino acid undergoes reactions like transamination, oxidative deamination, decarboxylation, racemization. तो फॉर एवरी रिएक्शन ट्रांसामिनेशन के लिए अलग एंजाइम होगा, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के लिए अलग एंजाइम होगा, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए अलग एंजाइम है, रेसिमाइजेशन के लिए अलग एंजाइम है. सबस्ट्रेट तो एक ही है ना. सबस्ट्रेट क्या है? अमीनो एसिड. स्टिल अमीनो एसिड एज अ सबस्ट्रेट कैन अंडरगो डिफरेंट रिएक्शन. फॉर दैट यू हैव डिफरेंट enzymes, right? Different enzymes, so known as reaction specificity. So we have seen the two specificity. First one is known as a stereo specificity, and second one is known as a reaction specificity. तो दो टाइप का स्पेसिफिसिटी होता है ना. एक होता है stereo specificity and एक होता है reaction specificity. Next is nothing but the third type of specificity is a substrate specificity. Third type of a specificity is nothing but the substrate specificity. मतलब enzymes will act on a particular substrate. Enzymes will act on a particular substrate. तो मतलब जैसे है ना, hexokinase will act on a only है ना 6 number sugars, जैसे glucose, mannose, है ना glucose, mannose, है ना and fructose like that. तो substrate specificity. तो इसमें तीन टाइप होते हैं. देयर आर 3 सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. फर्स्ट वन इज नोन एज एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी मीन्स क्या? सो एंजाइम्स आर एब्सोल्युटली स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. मतलब एक एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही है ना कैटलाइज कर सकता है. तो एंजाइम्स एक्ट ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट. In this category, enzymes act on only one substrate. For example, glucokinase, the enzyme act on a glucose to give glucose 6-phosphate. The urease enzyme, urease will break down the urea in ammonia and carbon dioxide. Known as the absolute substrate specificity. यूरियस सिर्फ यूरिया को ही ब्रेक डाउन करेगा, दूसरे कंपाउंड को नहीं ब्रेक डाउन करेगा. ग्लूकोकाइनेज विल कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-phosphate only, not fructose, not mannose. Known as a absolute substrate specificity. सेकंड टाइप होता है रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. मतलब क्या कि रिलेटिव मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ कॉमन होगा. जैसे आल्सो नोन एज अ ग्रुप स्पेसिफिसिटी. इसमें क्या है कि पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या फिर पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए है ना एंजाइम विल बी स्पेसिफिक. सो एंजाइम विल बी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर बॉन्ड. so it will act on a particular group or particular bond. Some enzymes act on a structurally related compounds or structurally similar compounds. So for example, trypsin is a proteolytic enzyme, will break down the पेप्टाइड लिंकेज एट अर्जिनिन एंड लाइसिन. यहाँ पे अर्जिनिन लाइसिन दिखाएगा यहाँ जहाँ पे अर्जिनिन लाइसिन दिखेगा प्रोटीन में, वहाँ पे ट्रिप्सिन वहाँ से ब्रेक डाउन करेगा. हीमोट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द पेप्टाइड एट एरोमेटिक अमीनो एसिड सीक्वेंस. जहाँ पे फिनाइलएलानाइन टायरोसिन दिखेगा वहाँ से वो ब्रेक डाउन करेगा. देन बॉन्ड स्पेसिफिसिटी से एंजाइम एक्टिंग ऑन अ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है ना और ईस्टर बॉन्ड, नोन एज अ रिलेटिव सबस्ट्रेट specificity. Now third होता है broad substrate specificity. मतलब there are 3 enzyme specificity: stereo specificity, reaction specificity, and third होता है substrate specificity. तो enzyme act on a closely related substances. मतलब एक particular type के substance से इसके ऊपर act होता है. Enzyme will act on a closely related substances, or that is known as the broad substrate
specificity. जैसे for example, hexokinase will act on a glucose, fructose and mannose. So these three are similar compound. Also glucosamine. These four are a similar compound: glucose, fructose, mannose and glucosamine. So hexokinase will act on these but not on a galactose. So this particular activity is known as a broad substrate specificity. तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी में आता है आपका स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, दूसरा आता है आपका रिएक्शन स्पेसिफिसिटी, तीसरा आता है आपका सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. सबसेट में तीन है: एब्सोल्यूट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड थर्ड आता है ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी. नाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुके हैं, तो वह अगेन ले रहा हूं मैं. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोथ आर द टाइप ऑफ रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन. दोनों भी क्या है? रिवर्सिबल टाइप के इनहिबिशन है. बोथ आर द टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन. एंजाइम इनहिबिशन में कितना आता है? रिवर्सिबल इनहिबिशन, irreversible inhibition है ना, सुसाइड इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन है ना. तो जो रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल यहाँ पे आर लिखता हूँ. इन द रिवर्सिबल इनहिबिशन you have competitive type and non-competitive type. In case of competitive, it is a reversible. In case of non-competitive, it is also reversible, but sometimes might be irreversible. Now, in competitive inhibition, inhibitor and substrate, जो substrate है, जो inhibitor है, उसका दोनों का structure क्या है? Similarity. There is a similarity in the structure, so substrate structure will resemble to the inhibitor, right? But in case of non-competitive, no structural similarity. Now third, inhibitor will bind to the active site. यहाँ पे जो competitive inhibitor है, that will bind to active site. In case of non-competitive inhibitor, it will not bind to the active site, it will bind to the another site. Now very important. In case of competitive inhibition, Vmax, maximum velocity, is a constant, but Km value is increased. Km is increased, Vmax is constant in case of competitive inhibition. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है GPAT. Right? Now in case of non-competitive inhibition, Vmax is lowered and Km is constant. देखो ना, यहाँ पे मैं क्लियर करके देखता हूँ आपको. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. क्वेश्चन was there on this. Competitive inhibition में क्या होता है? Vmax is a constant, but Km value is increased. And in case of non-competitive, Vmax is a decreased and Km value is a constant. Remember. Now, inhibitor cannot bind with the enzyme substrate complex. In case of competitive inhibition, inhibitor will not bind to the cannot bind to the ES complex. But in case of non-competitive, inhibitor can bind to the ES complex. है ना? Competitive inhibition में inhibitor will decrease the substrate affinity to the enzyme. But in case of non-competitive inhibition, non-competitive inhibitor does not change substrate affinity to the enzyme. यहाँ पे complex क्या बनेगा ना? In case of competitive inhibition, E plus inhibitor complex बना, मतलब enzyme inhibitor complex बनता है. In case of non-competitive inhibition, complex क्या होगा? Enzyme substrate inhibitor और enzyme inhibitor complex बनता है. What is the change taking place at a Michaelis Menten equation? यहाँ पे V is equal to Vmax S into 1 plus है ना, divided by 1 है ना, divided by 1 plus I inhibitor divided by Ki Km. ये changes होता है. Michaelis Menten equation changes to V is equal to this. ये equation change होता है in case of non-competitive inhibition. Linear double reservoir plot, ये भी चेंज होता है. 1/V is equal to Km divided by Vmax. ये इक्वेशन आपको एक चैटर्जी है. देयर इज वन बुक बायोकेमिस्ट्री बाय चैटर्जी.
इसमें ये चार्ट मिल गया। देन नेक्स्ट इज नथिंग बट द एंजाइम एप्लीकेशन, है ना, enzymes and their application. So enzymes are also having important application in the therapeutics, in the diagnostic, in the laboratory estimation, and their diagnostic importance is there. Particular disease में particular enzyme increase or decrease होता है. So they have industrial application, they have therapeutic application, they have diagnostic application, they have clinical applications. Okay. So first enzymes and their application, पहला है आपका clinical application और therapeutic application. So we have already seen in the anticoagulant chapter, thrombolytic chapter, so streptokinase and urokinase. Streptokinase and urokinase, these are the two enzymes which are used to dissolve the blood clots. In case of myocardial infarction, angina, coronary clots, or in case of stroke also. तो ये clot dissolve करने में help करता है. Then asparginase, we have seen in the cancer, asparginase is useful in a certain type of cancer. Papain is a proteolytic enzyme which is anti-inflammatory. Alpha antitrypsin in treatment of emphysema. Pancreatic enzyme जो है trypsin, lipase, chymotrypsin, they are used for their digestive purpose. जैसे hyaluronate है ना, hyaluronidase, hyaluronidase मतलब हाइलुरोनिक एसिड का एंजाइम होता है. तो हाइलुरोनिडेज इज यूजफुल इन द एनहांसमेंट ऑफ एनेस्थेटिक एक्टिविटी. तो एंजाइम्स यूजफुल इन द लेबोरेटरी एस्टिमेशन, है ना, जैसे ग्लूकोज ऑक्साइड एंड ग्लूकोज peroxide, they are useful in the estimation of blood glucose level or urine glucose level. Urease enzyme is useful to estimate the urea in the blood. Cholesterol oxidase is useful in the estimation of cholesterol level in the blood. Uricase enzyme is useful for the estimation of uric acid in the blood. Lipase is for estimation of triglycerides. Luciferase is useful for the estimation of to detect the contamination of bacteria in the food. Alkaline phosphatase is useful for the analytical tool in the ELISA test. ELISA test क्या है? It is a complement fixation test for diagnosis of AIDS. Significance of serum concentration of various diagnostic enzyme, मतलब क्या है कि certain particular diseases में particular enzyme बढ़ जाता है, कम होता है उसका. GPAT में क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर आ चुके हैं बहुत बार. तो फर्स्ट सीरम कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके तुरंत बाद में, है ना, ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड आल्सो आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, द एंजाइम लेवल ऑफ सर्टेन एंजाइम्स लेवल इज इंक्रीज्ड. जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट एंजाइम, सो मायोग्लोबिन, so soon after the myocardial infection, myoglobin is increased, so it is known as an early marker, but it is not a cardiac specific, है ना. सेकंड आता है कार्डियक ट्रोपोनिन 1, ये प्रोटीन होता है कार्डियक ट्रोपोनिन 1, so it is increased in case of myocardial infection, so it is an early marker and it is also cardiac specific. और इसी के ऊपर GPAT 2022 में क्वेश्चन है, the early marker for myocardial infection, that is a cardiac troponin 1. Second, है ना, then third cardiac troponin 2, same as above but also elevated in the another condition. बाकी दूसरे डिसीजेस में भी ये बढ़ता है. Now lactate dehydrogenase, इसके ऊपर तो कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. So it is a late marker but cardiac specific. So in case of myocardial infection, lactate dehydrogenase will also be increased. Creatinine phosphokinase, creatinine phosphokinase कब increase होता है? So again it is increased in the cardiac, it is a cardiac specific and early marker. Myocardial infection में ये लेवल आपके बढ़ जाएंगे. Creatinine phosphokinase will be increased, cardiac troponin first will be increased, myoglobin will be increased, lactate dehydrogenase will be increased. याद रखना है myoglobin, cardiac troponin 1, cardiac troponin 2, lactate dehydrogenase and creatinine phosphokinase. Out of that, the cardiac specific and early marker is nothing but the cardiac troponin 1. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी GPAT में 2022 में आ चुका है, बाकी एग्जाम में भी आ चुका है, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह. तो नेक्स्ट है इन केस ऑफ लीवर डिसीज, इन केस ऑफ हेपेटिक डिसीज,
लीवर डिसीज में कौन से एंजाइम बढ़ते हैं, देखो इन केस ऑफ लीवर डिसीज, सो व्हिच एंजाइम्स आर इंक्रीज्ड इन केस ऑफ लीवर डिसीज. In case of hepatic disease, alanine transaminase, ALT, alanine transaminase, so increase the level in a viral hepatitis. अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस है उसके डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, सिंपली ब्लड का एलानिन ट्रांसअमाइनेज लेवल चेक करेंगे. सो इफ एलानिन ट्रांसअमाइनेज लेवल इज इंक्रीज्ड देन नॉर्मल, सो पॉसिबिलिटी ऑफ वायरल हेपेटाइटिस. aspartate transaminase, AST, aspartate transaminase, increase the level in case of liver diseases as well as obstructive jaundice. Gamma glutamyl transpeptidase, है ना, gamma glutamyl transpeptidase, GGT, increased in the alcoholic liver disease. तो बेवड़े वाले लोग जो है उनमें ये उसका लेवल बढ़ता है. 5-nucleotidase, 5-nucleotidase that is increased in case of hepatic कोलेस्टेटिस, मतलब आपके लीवर में कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो उसमें है ना 5-nucleotidase इंक्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है. इससे फॉर एग्जांपल यू कैन सी टाइम कोर्स ऑफ एलिवेशन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंड क्रिएटिन काइनेज इन मायोकार्डियल इंफेक्शन. तो देखो है ना, जैसे यहाँ पे डेज आफ्टर इन्फेक्शन एंड यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, मतलब ये एंजाइम कितना बड़ा है. जैसे 0 डे के ऊपर है ना, ये 0 डे मतलब आज मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो आज ही है ना, देखो क्रिएटिनिन काइनेज, देखो क्रिएटिनिन काइनेज देखो बड़ा है, पहले ही दिन बड़ा है, पहले ही दिन क्रिएटिनिन काइनेज. क्रिएटिनिन काइनेज इज अ अर्ली मार्कर, क्रिएटिनिन काइनेज इज अर्ली मार्कर. तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे के आते आते ये कम होता है प्लाज्मा लेवल, बट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज कब इंडिकेशन देगा आपको, एट द 4th डे. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज अ लेट मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अर्ली मार्कर कौन है, दिस इज क्रिएटिनिन काइनेज. उससे भी कार्डियक स्पेसिफिक कौन है, क्रिएटिनिन काइनेज अर्ली मार्कर है बट इट इज नॉट अ कार्डियक स्पेसिफिक. क्रिएटिनिन काइनेज मसल का भी कोई इशू है तो दूसरे मसल का भी इशू में ये बढ़ता है. तो अर्ली मार्कर इज अ क्रिएटिनिन काइनेज नो डाउट, बट कार्डियक स्पेसिफिक अर्ली मार्कर इज अ कार्डियक ट्रोपोनिन 1. याद रखना है आपको. मसल डिसीजेस, तो मसल डिसीज में क्या है, क्रिएटिनिन काइनेज. इन केस ऑफ मसल डिसीज क्रिएटिनिन काइनेज इज इंक्रीज्ड इन द मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन. aldolase, aldolase इज अर्ली मार्कर फॉर मसल. aspartate transaminase, ये भी क्या है, अर्ली मार्कर इन द मसल डिसीज. बोन डिसीज में क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ बोन डिसीज लाइक रिकेट्स एंड पगेट डिसीज. रिकेट्स में ये बढ़ता है, पगेट डिसीज में बढ़ता है. पैंक्रियाटिक डिसीज में क्या है कि अमाइलेज एंड लाइपेज. अमाइलेज इज इंक्रीज इन केस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस. पैंक्रियाज का इन्फेक्शन हो गया तो पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं उसको, पैंक्रियाटाइटिस. अमाइलेज इज इंक्रीज्ड, लाइपेज इज इंक्रीज द acute पैंक्रियाटाइटिस. प्रोस्टेट कैंसर में कौन से मार्कर है, तो प्रोस्टेट कैंसर में भी इंपॉर्टेंट होता है एसिड फॉस्फेटेज, मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर, है ना. प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA इंक्रीज्ड इन केस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. इसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको आते हैं GPAT Niper DI Pharmacist. तो यू कैन से एंजाइम चैप्टर अगेन इंपॉर्टेंट है, so you can expect at least 2 questions from enzyme chapter, very very important, right? So again you can see selected examples of enzymes and their respective substrate competitive inhibitors, है ना. जैसे ये ऑलरेडी अपने देखा है, xanthine oxidase सबस्ट्रेट होता है उसका हाइपोजेंथिन एंड xanthine, है ना. तो उसका इनिबिटर कौन है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एलोपिरिनॉल, है ना. और ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी है, सुसाइड इनिबिटर भी है. So it is used in the treatment of gout, you know, because xanthine oxidase will convert xanthine hypoxanthine into uric acid. Uric acid will cause gout. So used to reduce the uric acid in the gout. Monoamine oxidase will metabolize the catecholamines, है ना, catecholamines. तो उसका इनिबिटर होता है ephedrine and amphetamine. Useful in the increasing the level of catecholamines.
डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है, उसका डायहाइड्रोफोलिक एसिड क्या है, सबस्ट्रेट है। तो अमाइनोटेरिन, अमितोप्रिन, methotrexate, they are the antagonist of the folic acid. They are used in the treatment of cancer. एसिटिलकोलिनेस्टरेज का ये जो एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट होता है एसिटिलकोलिन, उसको मेटाबोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसका इनिबिटर होता है सक्सिनिलकोलिन एंड इट इज यूज्ड इन सर्जरी फॉर द मसल रिलैक्सेशन। सक्सिनिलकोलिन डायहाइड्रोटेरेट सिंथेरेज, तो उसका सबस्ट्रेट होता है पावा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, एंड उसका इनिबिटर होता है सल्फोनामाइड्स। They are the antibacterial drug to prevent the synthesis of folic acid in the bacteria. विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, अभी ये विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज एंजाइम is very important for the activation of blood clotting factor. We have already seen in the anticoagulant chapter. विटामिन के क्या है, इसका सबस्ट्रेट है विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज, so it is inhibited by dicomerol, है ना, warfarin, so it acts as anticoagulant. HMG कोए रिडक्टेज, ये भी अपन ने देखा है इन लिपिड चैप्टर बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। HMG कोए रिडक्टेज इज एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट क्या है इसका, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोए, है ना, दैट कन्वर्ट टू कोलेस्ट्रॉल। सो जो ड्रग्स है लोवास्टैटिन, पार्वास्टैटिन, अटोवास्टैटिन, दे इनहिबिट दिस एंजाइम व्हिच इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ HMG कोए रिडक्टेज एंड दे आर यूज्ड इन द, है ना, टू इनहिबिट द कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन, है ना, in the cardiac diseases or in the obesity. Some enzymes and their allosteric effect are, देखो ये ऑलरेडी देखा आपने, हिस्टोकाइनेज कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस में इंपॉर्टेंट है ना, कन्वर्जन क्या करता है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका एक्टिव इनिबिटर कौन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस में होता है, एटीपी क्या है, इनिबिटर है, एएमपी एंड एडीपी क्या है, एक्टिवेटर है, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। Isocitrate dehydrogenase, it is an enzyme in a Krebs cycle. It is inhibited by ATP, activated by ADP and NAD. ATP inhibit करता है, ADP activate करता है, NAD activate करता है। Pyruvate carboxylase enzyme gluconeogenesis के लिए important है, तो इसका इनिबिटर एक्टिवेटर होता है कोए। fructose 1,6-bisphosphate, fructose 1,6-bisphosphatase ग्लूकोनेओजेनेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका इनिबिटर होता है एएमपी, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेरेज 1, इंपॉर्टेंट फॉर इन यूरिया साइकिल, आपने देखा यूरिया साइकिल। तो एन एसिटिल ग्लूटामेट इज अ एक्टिवेटर। ट्रिप्टोफैन ऑक्सीजनेज के लिए, ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक्टिवेटर होता है ट्रिप्टोफैन। देखो मायोग्लोबिन, है ना, समरी ऑफ डायग्नोस्टिक मार्कर यूज्ड इन द myocardial infection. Myoglobin level will be increased in the 4 to 6 hours after the, है ना, myocardial infection. It is the earliest marker. However, it is not, however, it is the cardiac specific. Myoglobin मतलब मसल, है ना, ये अर्ली 4 to 6 आवर, मतलब जैसे मायोकार्डियल होता है इन्फेक्शन होता है, वो विद इन 4 to 6 आवर इसका लेवल बढ़ जाता है ना, but it is early marker, earliest marker, but not cardiac specific. Cardiac troponin 1, ये 24 to 12 to 24 आवर्स में बढ़ता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो विद इन 12 to 24 आवर्स बढ़ता है एंड इट इज अर्ली मार्कर एंड कार्डियक स्पेसिफिक। इसके ऊपर क्वेश्चन जीपीएट 2022 में कार्डियक ट्रोपोनिन टी ना, relatively early marker and cardiac specific, however elevation in other diseases, cardiac troponin 2A, creatinine phosphokinase, है ना, 20 to 30 आवर्स में बढ़ता है, कार्डियक स्पेसिफिक एंड अर्ली मार्कर। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज लेट, उसका आता है 48 to 72 आवर्स में, लेट मार्कर एंड कार्डियक स्पेसिफिक। एस्पार्टेट ट्रांसअमाइज, इट इज नो कार्डियक स्पेसिफिक। तो ये एंजाइम्स diagnostic of enzymes of diagnostic importance, enzymes of diagnostic importance. एंजाइम, अगर
सीरम एंजाइम प्रोफाइल पैटर्न इन डिसीजेस। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अपन ऊपर देखा है। लीवर डिसीज में क्या है, अलानिन ट्रांसअमाइनेज, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, गामा ग्लूटामिन ट्रांसपेप्टेज एंड पाइरुवेट न्यूक्लियोटाइड, ये सब बढ़ता है, इट इज इंक्रीज्ड। मसल डिसीज में क्रेटिनिन काइनेज बढ़ता है, अल्डोलिस बढ़ता है, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज ये भी बढ़ता है। बोन डिसीज में अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ता है। पैंक्रियाटिक डिसीज में मतलब पैंक्रियाटिस में अमाइलेज एंड लाइपेज बढ़ता है। प्रोस्टेट कैंसर में ये एसिड फॉस्फेटेज एंड प्रोस्टेट एंटीजन ये बढ़ता है, अपने देखा है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलो एंजाइम्स, तो ये भी देखा है, कॉपर कैल्शियम किसके लिए लगता है, तो मेटल कॉपर लगता है इसके लिए, ये एंजाइम्स। सुपरऑक्साइड डाइम्यूटेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, लाइसिल ऑक्सीडेज। कैल्शियम लगता है लाइपेज एंड लेसिडिनेज के लिए। आयरन लगता है कैटलेज, जैंथिन ऑक्सीडेज, पेरोक्साइडेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। मैग्नीज किसके लिए लगता है, इनोलेज, एक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोमेटेज, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज। Magnesium is important for hexokinase, knowledge, glucose 6 phosphorase, phosphofructokinase, molybdenum is for xanthine oxidase, zinc कार्बन, ये देखा है ऑलरेडी। यहाँ पे और एक स्लाइड है ना, और यहाँ पे लास्ट एक स्लाइड देखो, ये ऑलरेडी इंडस्ट्रियल है ना, एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एनालिटिकल ग्लूकोज ये भी देखा है आपने। restriction endonuclease, application of enzyme in genetic engineering. Restriction endonucleases are useful in the gene transfer and DNA fingerprinting. बाकी तो ये ऑलरेडी देखा है। कोएंजाइम्स नॉट रिलेटेड टू बी कॉम्प्लेक्स स्टडी, बहुत सारे कोएंजाइम्स बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट सम एंजाइम्स आर नॉट सम कोएंजाइम्स आर नॉट अ बी कॉम्प्लेक्स। इसमें आता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, साइटिडीन डाइफॉस्फेट सीडीपी। एटीपी क्या करता है, डोनेट द फॉस्फेट। सीटीपी क्या करता है, सीडीपी रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस एज अ कैरियर फॉर कोलिन एंड इथाइलामाइड। यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी कैरियर फॉर मोनोसेकेराइड। सैम ये सडेनसिल मिथ्योनिन डोनेट्स द मिथाइल ग्रुप इन द बायोसिंथेसिस रिएक्शन। PAPS मतलब क्या, फॉस्फोएडेनोसिन फॉस्फोसल्फेट donates the sulfate and synthesis of immunopopulation. This will end your topic known as enzymes. एंजाइम टॉपिक आपको खत्म हो गया। ये एक स्लाइड आपने नहीं लिया है बिकॉज ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो एक है जैसे एंजाइम्स कौन से अवेलेबल है, यूरोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज अवेलेबल है, ये लास्ट प्रोटीन्स अवेलेबल है ना। उसके बाद सेरेशोपेप्टिडेज अवेलेबल है, हाइलुरोनिडेज अवेलेबल है। ये सब एक स्लाइड है, दिस स्लाइड भी लिख देना चटर्जी बुक, और नहीं तो फिर जो है 10 मिनट मैं ऐसे लगता हूँ, बाद में पॉज करके लिख देना। इफ एनीबॉडी वांट्स टू रीड दिस स्लाइड है ना, बाद में आप रीड कर लेना पॉज करके भी। इसके लिए एंड योर टॉपिक नोन एज enzymes. So from biochemistry, your carbohydrate and its metabolism, lipid and its metabolism,